All right. So thank you. Now I am the co-host, and let me do. And what do I do? I'll share the screen. All right. Fantastic. All right. Okay. Okay. All right. So this is the day. So this is the cycle. So in case anybody who has joined today and wasn't available yesterday, so guys, this is the curriculum for the entire 10 days that we are going to spend together, that we are going to learn together for the software testing. So this is the 10-day curriculum, wherein every day there will be 1 hour class, and the live training is free. This will also include a participant certification, right? That will also include a completion certificate for each of the participants. The only condition is that you need to attend all the 10 classes. All right. Completion certificate will be issued to everybody, whoever joins the entire course of the testing class. Okay. So yesterday no, on Saturday we had our first class wherein we discussed this. We discussed introduction to software testing, we discussed testing principles, and we discussed skills for testing. So like yesterday, we all were so active, proactive, and replying to all the answers, to all the comments. I would encourage everybody to be active, to hear and to interact in between with me by any answering the classes, answering the questions, or asking me questions, or giving any inputs or any suggestions, so that we all learn together. Okay. So now today is the day 2 wherein we are going to study about SDLC and STLC. I'll try to cover these both SDLC and STLC in today's class. Okay. All right. All right. So everybody, so SDLC is a very, very important phase in the IT industry. Okay, so SDLC is something called as software development life cycle, wherein you think about building a software till the time that software is working fine and working fine and working fine, and it continues to work fine. That is something that is called as a development life cycle. Okay, so development life cycle is something wherein you think about a problem. Okay, how does this development life cycle be? How does this development life cycle be? That you think about a problem, and then you think about a problem, and then you try to find solution. You think that solution in your mind. Okay. All right, everybody, you think that solution in your mind, and then after you start thinking that solution in the mind, you implement that solution, you start delivering the benefits of the solution, and then it is available for the entire people to use that application. This is how it comes. And so a development usually happens with a problem. Suppose कि आप कोई काम मैनुअली कर रहे थे और आपको लग रहा था कि नहीं, अभी ये वाला काम मैनुअली हो रहा है ना, तो इसमें बहुत एफर्ट्स जा रहे हैं, उसमें बहुत टाइम जा रहा है, इनफैक्ट उसमें पैसा भी बहुत जा रहा है, देन व्हाट वी कैन थिंक, वी डू एन ऑटोमेशन. ठीक है, तो हम वैसे ही, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम नाउ, फ्रॉम इट्स 2023, सो इफ आई हैव टू से समवेयर अराउंड 15-16 years back, when we used to go to the counter and book the tickets for railways. You remember, we used to be in the line, we used to fill the form, and then हम वो form लेके आते थे और हम उसमें details भरते थे, and then we used to submit that to the counter, and then they used to issue a counter ticket. So there was a big line, there was a big queue. लोग 5 o'clock 6 o'clock को सुबह आते थे, and then they used to be there till 2 o'clock 3 o'clock in the afternoon, and almost entire day was wasted just for booking the ticket. Then railways thought that why not if we just make this online. Why not if we just make this online? This will reduce people's effort, this will reduce people's time, and this will reach to the entire world. ये वहां पर भी पहुंचेगा जहां से काउंटर, टिकट काउंटर जहां से 20-20 किलोमीटर की दूरी पर काउंटर्स होते हैं, वहां पे भी हम पहुंच जाएंगे. सो हमारा स्कोप बढ़ेगा, हमारे कस्टमर्स बढ़ेंगे, रेवेन्यू आएगा, एंड लोगों को प्रॉब्लम्स कम होगी, और हमारा हमारा बिजनेस बढ़ेगा. Make sense? Make sense, guys? So whenever there is a problem, people think that analytics thinking karte hain, and then they come out of a solution. And that is how a software is developed and released and being used by the world.
ठीक है, I just gave an example of IRCTC because we all relate to that. That is something which is widely used by all of us, and we also know कि 15-16 साल पहले जब हमारे mom and dad tickets लेते थे, तब then there was no this mechanism of online the way we do it. So you could all relate it वैसे ही. तो सबसे पहला phase क्या होता है ना, analysis. What does an analysis phase mean? Analysis is something that will tell that okay, now I have a problem. Okay, now the problem is that user cannot book a ticket by sitting at the home. So then now you have already thought that you need to build something online. आपके दिमाग में पहले आ चुका है कि आपने एक चीज बनानी है ऑनलाइन. अब वो ऑनलाइन करने में उसकी एनालिसिस, दिस इज नॉट द एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, दिस इज द एनालिसिस ऑफ द सोल्यूशन. वी ऑलरेडी नो द फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल वहां से शुरू होते हैं गाइस, जहां से हमें पता रहता है कि हमारा अब सोल्यूशन स्टार्ट होगा. ठीक है, हमने वो डिस्कशन, प्रॉब्लम क्या था क्या नहीं था, और हमने उसके लिए क्या क्या करना है वो भी हमने डिसाइड कर लिया, हमें क्या सोल्यूशन चाहिए वो भी हम डिसाइड कर चुके हैं. उस फेज से लेकर ना वो वाला फेज स्टार्ट होता है, वहां से लेकर वी स्टार्ट बिल्डिंग दी सॉफ्टवेयर. ठीक है, वहां से वी स्टार्ट बिल्डिंग दी सॉफ्टवेयर. सो एनालिसिस इज समथिंग दैट इज डन बाय द कस्टमर विद द, और ये पूरा काम आईटी टीम करती है. This is where the IT team works. This is where you guys are going to get the job in. Okay, so analysis of the requirement. What is this first phase talks about? Analysis of the requirement. This talks about the analysis of the requirement. मीन्स कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, आपने ये सारे लिखा 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 कि ठीक है कि हमारे पास ये सारे फेजेस है, ठीक है, हमारे पास ये सारे रिक्वायरमेंट है, दैट ओके विथ इफ आई एम यूजिंग एन आईआरसीटीसी आई शुड बी एबल टू बुक अ टिकट. मैं उसमें एक टिकट बुक कर सकती हूँ, मैं उसमें एक टिकट कैंसिल कर सकती हूँ. तो वो सारा स्टेप बाय स्टेप लिखा होगा रिक्वायरमेंट में. Now that requirement turns into a document called as BRD. ठीक है, वो डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो जाता है BRD, which is written by a business analyst, which we called it as BA. So BA writes the BRD, and what is the BRD? BRD is the list of all the user requirements after discussing with the business. And guys, in the IT, from this phase till this phase, the most critical document is BRD. ठीक है, बीआरडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारे लिए है. ठीक है, तो एनालिसिस फेज में हमें बीआरडी मिल गया. नाउ it goes now to the next phase, design phase. Design phase means software architect. Software mein there is a skill called as, or there are people who are architects. Architects are everywhere. There are house architects, there are home architects, they all do all kind of architects. ठीक है, the architects in general are the people who design, who do the designing part. Similarly, जैसे ही हमारे पास बीआरडी आता है, then they start drawing, then they just start designing a prototype. एक प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, वेबसाइट ऐसी दिखेगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक डिजाइन टाइप सा, ओके, इसका डेटा के साथ कनेक्शन कैसा होगा, यहाँ पर ये यूआई ऐसा दिखेगा, लेकिन उसका डेटा के साथ कनेक्शन का फ्लो कैसा रहेगा. that all things will be that all things will be done in the designing part. एंड हु डज दिस डिजाइनिंग? और डिजाइनिंग के फेज में हमें क्या मिलने वाला है? जैसे एनालिसिस के फेज में हमें बीआरडी मिला था, वैसे डिजाइनिंग के फेज में हमें एसआरएस मिलने वाला है. एसआरएस इज कॉल्ड एज सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. And who is going to design this SRS? The architect is going to design this SRS. Software architect or designer. We also call it as a designer, but mostly we call it as a software architect. ठीक है, अब बीआरडी मिल गया और हमें एसआरएस भी मिल गया. नाउ दीज टू बोथ द डॉक्यूमेंट्स आर सर्कुलेटेड टू द टेस्टिंग टीम एंड टू द डेवलपमेंट टीम. After reading these two documents, guys, this is where our testing starts. As soon as these two documents are issued to us, BRD as soon as हमें मिल जाता है और हमें जैसे ही SRS मिल जाता है ना, हमारा टेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है. दिस इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई से अर्ली टेस्टिंग. मींस आप BRD पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप SRS पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. यू स्टार्ट रेजिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द BRD. You start understanding what is the BRD. You start reading the SRS. You start understanding the flow of the document. All right, so this is, and the same document goes to the development team. Development team also starts looking into it, and they also starts designing their code.
ठीक है, ये दो डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग डेवलपमेंट टीम के पास आएगी और टेस्टिंग टीम के पास आएगी। डेवलपमेंट टीम उससे कोडिंग करना स्टार्ट करेगी और टेस्टिंग टीम उसे पढ़ के समझने का प्रोसेस स्टार्ट करेगी। ठीक है, दिस इज व्हाट इज नाउ थर्ड फेज इज डेवलपमेंट वेयर द कोडिंग एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट्स। that okay ये पेज ऐसा दिखना चाहिए, okay we are going to use java, so we are developing this with java, so हम language कौन सी use कर रहे हैं, okay java, we can might use php, we might use c++, whatsoever language has been decided that's been used and the software is finally being developed। मतलब एक चलता फिरता सॉफ्टवेयर हमारे पास बन के आता है और फिर that goes into the testing team। टेस्टिंग टीम को क्या मिलेगा, बिल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, बिल्ड or an application or a working software or a working software। Now this is where we have to fit in, this is our role, this is the area that we belong to, testers। Okay, this is the area that is where we belong to, which is the testing area। So now we are going to read this only in detail। Okay, this testing in and out we are going to study in detail। So now it comes to testing। Now what do, we test the entire application, entire build हम test करते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, build सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करने लग गया, build पूरा अच्छे से काम कर रहा है, सब अच्छे से हो रहा है, everything is working fine। Now you can go and do the deployment। Deployment means releasing, deployment means releasing or go live। What is deployment? Deployment is releasing or go live, means now for example if I talk about our IRCTC, testing has been done in IRCTC, now you can release IRCTC to the entire world for booking the ticket। That is the phase which is called as deployment, that is the phase that is called as deployment। Now the last phase is the maintenance। Guys, if anybody has used the IRCTC customer care or HDFC bank customer care or anything, any project or any application or any software that is working will have to have a maintenance and support for sure। Mandatorily they need to have a support mechanism or a support somebody to support them or to maintain the software। Why? Because if you are stuck in this while using this software, you can pick up and call to customer care and asking, hey, hi, hello, this is not working, that is not working, how do I do? So they are going to provide you support। And maintenance is what, the every weekly, monthly, yearly maintenance, they need to keep on upgrading the system, they need to upgrade the database at some point of time। So this maintenance activity is always going to go till the time the software is live and is people are using it, this maintenance will never stop, maintenance and support active will never stop। ठीक है, अगर आज IRCTC पे users, if suppose IRCTC पे today if I say there are 20 crores user using IRCTC, then imagine the maintenance and support that they might require। So they would have a huge team which would do a maintenance and support the people। जितना बड़ा सॉफ्टवेयर जितना बड़ा से भी ज्यादा, जितने ज्यादा यूजर्स रहेंगे उस एप्लीकेशन के लिए, द मेंटेनेंस एंड द सपोर्ट विल बी ह्यूज, will be huge। So this is what is the 6 phases of the software development life cycle। Exactly, maintenance is an ongoing activity because so many updates are coming after releases। Absolutely, you remember whenever you have an iOS phone or an Android phone, after 2 months, 3 months, there is an update that your iOS will get updated, your Android will get updated, select a time। So they have their maintenance, that is what they are releasing new versions, they are maintaining our phones, and so they're maintaining the software of our phone basically। So the maintenance is an ongoing activity which will never stop till the time it will keep on, till the time we decide that now we are going to completely shut down any system, अब हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, that is when it is going to stop, and that is what it is, the software development life cycle। Okay, all right, so because we are going to focus on testing, we will directly move on to the testing life cycle after this, because hamara we know, and you know guys what, this is a high level of a software development cycle। ऐसे ही हर एक फेज का अपना लाइफ साइकिल है।
So analysis will have its own life cycle, design will have its own life cycle, development will have its own life cycle. इसके अंदर उनका खुद का life cycle होगा. Testing will have a life cycle, deployment will have a life cycle, and so on. But since we are doing the testing classes and we all are interested into testing, we are going to learn about more about the testing. So in the next one, we are going the next slide. We will see the testing life cycle. Okay. Any questions so far? Anybody? Let me just quickly have a look at the questions. If you have any questions, please type in, and or any feedback or any suggestion that we want to go little slow or little fast or anything, then I will finally well try to incorporate those changes. BRD is the business requirement document that has been created at the first phase, which is the analysis phase, and the business analyst creates it. BA is the name is BA, and BRD is the main document for the entire software life cycle. Yes, you will get the recordings, Bhushan. Recordings milenge. So yes, STLC and SDLC, we are going to come to that. SDLC is the one that we just studied, which is the software का life cycle बता रहा है वो, which is going to tell us about the life cycle of the development, and testing is something that is going to talk about इसके अंदर का life cycle. Software development मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा at a larger scale. But when I'm talking about STLC, it will talk about the life cycle for this. इसके अंदर रहेगा STLC, इसके phases रहेंगे. That is called as STLC. ठीक है. ठीक है. So this is what is the definition. I'll quickly go through it. I will read it for you. Just listen it and try to understand. Software development life cycle is a systematic process for building software that ensures the quality and correctness of the software built. SDLC process aims to produce high quality software. System development should be completed in a predefined time frame. है कि नहीं? The time frame that has been decided, we need to follow that time frame. Or else there is no point. As if I commit to the customer that I will deliver you a working software within 3 months, and I don't deliver it, then there is of no point. ठीक है? The system development should be completed in the predefined time frame and cost. SDLC consists of a detailed plan which explains how to build, maintain a specific software. Every phase of the SD life cycle has its own processes. I told, right, that this every process, every phase, analysis phase, design phase, इनके खुद के अपने life cycles होंगे. But since we are doing testing, we are going to learn about the life cycle of the testing. SDLC stands for Software Development Lifecycle and is also referred as Application Development Lifecycle. Fine. Now let's move on to. So I see I have answered all the questions. So let's move on to the STLC. We are now going to study about STLC, which is Software Testing Lifecycle. Okay, so if you see this one, software testing life cycle has again having how many phases? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Requirement analysis at the STLC, test planning, test case development, test setup environment, test execution, and test cycle closure. Okay. Okay. Now requirement analysis. So requirement analysis, like I said, once the BRD has been created, and BRD is created at the first step of SDLC, guys. BRD जो है ना वो यहाँ पे create होता है. देखो यहाँ पे create हो जाएगा BRD. तो जैसे ही we get the BRD ना, हमारा internal phase का ये वाला first phase start हो जाएगा. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की लाइफ साइकिल का फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हमें BRD मिलेगा.
As soon as we get the BRD, our requirement analysis will start. When I say requirement analysis means, suppose this is the BRD, I'm going to read each and every lines of the BRD, each and every features, each and every requirement. BRD is all about requirement. I'm going to write about all the requirements, 1, 2, 3, 4, like this, like this, like this. And then I'm going to अंडरस्टैंड द बीआरडी. सो एट दिस फेज आई एम गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. मैं यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लूंगी ताकि मुझे बीआरडी इन एंड आउट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. और अगर मुझे नहीं समझ में आएगा देन आई एम गोइंग टू टेक हेल्प विद द बीए. किसने वो बीआरडी लिखी है? BA has written the BRD. Who is the owner of the BRD? The BA is the owner. So I'm going to have sessions with him. मैं पूरा का पूरा BRD समझ के लूंगी. That is called my requirement analysis phase. Now I move on to my next testing phase, which is called as test planning. So test planning is a document. Test planning is generally a document which talks about the steps, these steps in detail, that why you are testing, why you are testing, what was it, what was the problem before, why do you want to do the testing of this project, okay, what is it that you're going to test, what is in scope of this testing, of this application testing, what is it that is not in the scope, guys. हम ये भी मेंशन करेंगे कि मैं अगर आईआरसीटीसी का फिलहाल अगर सिर्फ बुक का टिकट स्टार्ट हुआ है और कैंसिल अ टिकट नेक्स्ट वर्जन में होगा तो मैं वहां पे लिखूंगी that the testing team will only test book a ticket and will not test cancel a ticket because that feature is not yet developed. Right? So that is, I'm going to write each and every planning. In general, planning is what? Planning is planning, right? So हम उसके आगे टेस्ट लगा दिए, मतलब हमारी उस टेस्टिंग की हम प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, मैं कब स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं कब खत्म करने वाली हूँ, मुझे उसके लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, मेरा किन पे डिपेंडेंसी है, मेरा डेवलपमेंट टीम पे डिपेंडेंसी है, हाँ है, क्यों, क्योंकि मैंने डिफेक्ट रेज किया तो उसे फिक्स कौन करेगा, मेरी बिजनेस एनालिस्ट पे डिपेंडेंसी हाँ है, क्यों, क्योंकि अगर मुझे बीआरडी में कुछ नहीं समझ में आएगा तो उसे कौन रिजॉल्व करके देगा. सो मुझे जो जो टेस्टिंग में जरूरत है वो सारा कुछ मैं डॉक्यूमेंट करूंगी टेस्ट प्लान में. आई एम गोइंग टू राइट A to Z in the test plan. ठीक है, that how I am going to communicate with the people, okay, how my test environment is going to be, how what kind of data I'm going to use, oh, ठीक है, what is in scope, what is in out scope, at which date I will try to start, at which day I will finish. I will mention each and every details of the testing in the test planning document. ठीक है, ठीक है guys, any questions so far for requirement and test planning? Any questions or anything that anybody would want to ask me? No, very good. Fantastic. So now you have done the test planning. आपने test plan बना लिया. You have written the document. Now you will move into the test case development. Suppose guys, I have this IRCTC website and then you have to book a ticket. Now what all cases come here into while booking a ticket? हमारे वो सारे सिनारियोज हमें आइडेंटिफाई करने हैं. पहले पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू लॉग इन टू आईआरसीटीसी. तो लॉग इन हमारा एक सिनारियो हो गया, ठीक है. देन वी क्लिक इनटू दी बुक अ टिकट, बुक अ टिकट हमारा सेकंड सिनारियो हो गया. नाउ लॉग इन अ टिकट के अंदर जो हम लाइन बाय लाइन लिखेंगे ना वो हमारा टेस्ट केस हो गया. दैट एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, ठीक है, क्लिक ऑन कंटिन्यू, एंटर द कैप्चा, ऐसे करके वो हमारा एक टेस्ट केस हो गया. ऐसे ही ना एक टेस्ट केस का एक फॉर्मेट होता है, जैसे टेस्ट प्लान का एक फॉर्मेट होता है वैसे ही टेस्ट केस का एक फॉर्मेट होता है. आजकल की कंपनीज जनरली टूल्स यूज करती हैं फॉर राइटिंग टेस्ट केस और फॉर टेस्ट मैनेजमेंट. मतलब पूरा का पूरा टेस्ट मैनेजमेंट ना is now taken care by a tools is now taken care by tools. ठीक है, टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स हम उनको बोलते हैं. जैसे अभी ना ऑक्टेन बहुत ज्यादा मार्केट में है. ऑक्टेन, दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग. व्हाट इज एन ऑक्टेन? ऑक्टेन इज अ टेस्ट मैनेजमेंट टूल जहां पर आप अपना टेस्ट प्लान लिख सकते हैं, जहां पर आप अपना टेस्ट केस लिख सकते हैं, जहां पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जहां पर आप डिफेक्ट्स लॉक कर सकते हैं. मतलब अगर आपको किसी को अपना प्रोजेक्ट का टेस्टिंग समझाना है आप सीधा उसको ऑक्टेन में लेके चले जाएंगे. ऑक्टेन इज अ टूल.
ठीक है, आपके पास उस समय कोई डॉक्यूमेंट नहीं, आपको कोई शेयर ड्राइव पे जाके खोजना नहीं है, आपको कहीं सी ड्राइव पे जाके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं खोजना, क्योंकि एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन ऑक्टेन. ठीक है. So that is where you start writing your test case. Generally companies na tool pe hi test case likhwati hai. There are very less companies, few companies that still uses Excel. Most of the companies ask you to design the test cases using a tool, either Octane tool, either AML tool, Jira tool, any tool that the company has purchased. They will ask you to write the test cases on that tool. So the third step is the test case development step. ठीक है. The third step is the test case. Now setup of the environment. So guys, this is a very important thing. So individual module में भी BRD refer करना पड़ता है. So guys, so see, the BRD is a big document which will talk about the entire application. It will depend upon the organization, plus it will depend upon your client, that he is giving the requirement of all the documents in one BRD or he wants to split it up. Either is okay. ठीक है, हमारे लिए दोनों में से कुछ भी चलेगा. इट डिपेंड्स ऑन द मॉडल दैट यू आर फॉलोइंग. इफ यू आर वर्किंग इनटू अ स्क्रम मॉडल, then there will be an epic, there will be story, and so on. That will be an agile model. If you are working in a waterfall model, then the structure will be different. So it depends कि आप जिस organization के लिए काम करते हैं वो कौन से मॉडल पे काम कर रही है. ठीक है, तो वो उसके हिसाब से इंडिविजुअल बीआरडी भी बन सकता है, उसको हम स्टोरी पॉइंट्स बोलते हैं, या फिर हम उसको बीआरडी बोलते हैं अगर हमें वाटरफॉल मॉडल यूज करना है तो. ठीक है. अब नाउ टेस्ट केस डेवलपमेंट. सो थर्ड स्टेप इनटू टॉप सॉफ्टवेयर इज द टेस्ट केस डेवलपमेंट. अब हमने अब हमको टेस्ट प्लान हो गया. अब मैंने टेस्ट केस लिखना स्टार्ट कर दिया. लिखना मींस दैट यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन टू IRCTC. तो मैंने उसके टेस्ट केसेस बना दिए. उसका एक टेम्पलेट होता है. नाउ द टेस्ट केस हैज बीन डिजाइंड. नाउ आई गो ऑन टू द टेस्ट सेटअप ऑफ द टेस्ट एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट सेटअप मींस सो द डेवलपर्स विल बी डूइंग अ टेस्टिंग इन देयर लोकल मशीन्स. वो वहीं पे वहीं कोड करते हैं, वहीं डेवलप करते हैं और अपने मशीन्स पे रीरन करके चेक करते हैं. जब उन्हें टेस्टिंग टीम को देना रहता है ना, तब दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट. दैट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड टेस्टिंग एनवायरनमेंट. That environment is called testing environment, and that will have the data that is required for testing. Suppose if you are doing an IRCTC and you don't know the source and the destination. अगर आपको सोर्स और डेस्टिनेशन ही नहीं पता, then how will you test that application? So putting up the data inside it, setting up an environment means setting a test environment, putting all the data. If the data are sensitive, then doing encryption of the data, and then doing an anonymization of the data, and then putting the data into the testing environment for us to do the testing. That is called the setup of the test environment. सेटअप ऑफ द टेस्ट एनवायरनमेंट माइट इंक्लूड एन SIT. टेस्टिंग का पूरा एनवायरनमेंट बनाएंगे जिस पे सिर्फ टेस्टिंग टीम काम करेगी. मतलब उस URL को कोई और यूज नहीं करेगा, वो सिर्फ हम यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ IRCT had to create a test environment, they would have simply said IRCTC test.co.in. ठीक है, अभी क्या है irctc.co.in के पूरे वर्ल्ड के लिए. लेकिन अगर उन्हें टेस्टिंग टीम के लिए एनवायरनमेंट बनाना पड़ता ना, then probably they would have made like this: irctc.test.co.in, hdfctest.co.in. That is called a creating or setting up a test environment. That is called setting up a test environment. ठीक है, समझ आ रहा है? Is people understanding what I'm trying to explain? STLC? All right, yes. All right, very good. Okay, so that is the setup of the test environment. Now comes the actual testing, which is called as test execution. अब मैंने इतनी होमवर्क करी है 1-1.5 महीने से. मैं
मैं बीआरडी पढ़ रही थी, मैंने एनालिसिस करा, मैंने इतने क्वेश्चंस लोगों से पूछा, दिस दैट, एंड आई रोट द टेस्ट केसेस, आई डिड द सेटअप ऑफ द एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ द डेवलपमेंट टीम. अब मेरा एक्चुअल टेस्टिंग आ गया है. ठीक है, अब मेरे पास ये आईआरसीटीसी है, तो मैं जेन्युइनली जाके बुक माई टिकट पे बुक करके देखूंगी. And the application is ready, the software is ready. That is called the test execution. तो ना वो टेस्ट एग्जीक्यूशन के साथ साथ ना और एक फेज आता है, साथ में ही रहता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट लॉगिंग. दैट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट लॉगिंग मीन्स जब मैं टेस्ट एग्जीक्यूट कर रही हूँ, जब मैं इफ आई एम ट्राइंग टू बुक अ टिकट और इफ आई एम ट्राइंग टू डू एनी टेस्ट एनी फंक्शनैलिटी, एंड इफ दैट फंक्शनैलिटी इज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, what should the line be? That functionality is not working as expected, then I need to do what? I need to log a defect. मैं एक डिफेक्ट लॉग करूंगी और उस डिफेक्ट लॉग का मतलब होता है कि मैं वो डेवलपमेंट टीम को जाके बताऊंगी कि सी मुझे टिकट बुक करनी थी, लेकिन मैं यहाँ पे जब भी क्लिक कर रही हूँ और मैं जब वहां पे डेटा भर रही हूँ तो वो अपने आप डेटा चला जाता है. The data gets erased automatically. Suppose this is a defect. तो डेवलपमेंट टीम चेक करेगी, बोलेगी या इट इज अ डिफेक्ट. सो वो बोलेगी कि या इट वाज अ डिफेक्ट. ठीक है, अब वो डिफेक्ट हो गया था. अब क्या होगा कि वो डिफेक्ट था, तो हम क्या करेंगे, उसको डेवलपमेंट टीम व्हाट दे विल से दैट ओके फाइन आई विल फिक्स दिस डिफेक्ट. हम उसको फिक्स करने का मतलब क्या बोलेगा कि ओके डेटा इरेज हो रहा था ना, जब भी आप डेटा एंटर कर रहे थे देन डेटा वाज गेटिंग इरेज्ड, so now I have fixed it, now you do the testing again. So now they will again deploy us a new build and then we will do a testing again on that and we will check कि okay अभी तो erase नहीं हो रहा है. So this process goes on having test execute करना, defect lock करना, execute करना, defect, ये जब तक होते रहेगा तब तक कि हमें एक भी डिफेक्ट नहीं मिलता. और जब तक हमने जो टेस्ट केस लिखे थे ना, 50 टेस्ट केस, 100 टेस्ट केस, 200 टेस्ट केस, 500 टेस्ट, जब तक हमने वो पूरा लॉट रेडी कंप्लीटली टेस्ट नहीं कर दिया है, तब तक हम ये एक्टिविटी करते रहेंगे. टेस्टिंग कीजिए, डिफेक्ट लॉक करिए, डिफेक्ट फिक्स हो गया, डिफेक्ट को टेस्ट करिए, फिर टेस्टिंग करिए. ऐसे करके जो आपने ये थर्ड फेज में टेस्ट केस लिखे थे ना पूरे के पूरे बीआरडी देख के, हम वो लाइन से पूरे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, हम लाइन से वो पूरे के पूरे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गया हमारा, एंड देन नाउ वी से दैट ओके नाउ द टेस्ट एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड, हमने पूरी टेस्टिंग कर ली है, इट इज वर्किंग फाइन, दिस इज ऑल वर्किंग एज एक्सपेक्टेड. मींस सारे सारे फीचर्स, सारे टेस्ट केसेस, सारा कुछ अच्छे से काम करने लग गया. आई एम हैप्पी विद दिस एप्लीकेशन नाउ एज अ टेस्टर, मैं ये एप्लीकेशन से खुश हूँ, दिस इज नाउ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड. Then we will move on to our final phase, which is the test closure phase. Which is the test closure phase. Test closure phase क्या बोलेगा? Test closure phase, it will explain that what is the test closure phase going to explain is going to explain that what all closing part. हम हमेशा क्या बोलते हैं, क्लोजिंग पार्ट. सो टेस्ट क्लोजर इज गोइंग टू टेल यू ओके इतने टेस्ट केसेस थे, इतने टेस्ट केसेस आपने, ओके सो देयर वर 500 test cases I had written, out of which I executed 400 test cases, and then 100 failed first time, and then I again executed. तुम्हारी पूरी की पूरी हिस्ट्री रहेगी, पूरी की पूरी तुम्हारी हिस्ट्री रहेगी. किसकी हिस्ट्री रहेगी? पूरी की पूरी टेस्टिंग वाली हिस्ट्री रहेगी कि आपने क्या क्या टेस्ट किया, आपने स्टार्टिंग से लेकर क्या क्या टेस्ट किया. आपने आपने पहले टेस्टिंग इस डेट को स्टार्ट की, आपने इस डेट को खत्म की, आपने 500 टेस्ट केसेस टेस्ट करे, आपने डिफेक्ट्स कितने रेज किए. दैट विल टॉक अबाउट योर एंटायर हिस्ट्री ऑफ द टेस्टिंग दैट यू हैव डन इन दिस एप्लीकेशन. दैट विल हैव अ टेस्ट क्लोजर साइकिल क्लोजर डॉक्यूमेंट. ये टेस्ट साइकिल क्लोजर होगा. ठीक है, टेस्ट साइकिल क्लोजर मतलब मैं अपनी टेस्ट की जो साइकिल थी ना, मतलब एसटीएलसी को क्लोज कर रही हूँ. अब इसका मतलब क्या होता है, दैट आई एम नाउ क्लोजिंग माय एसटीएलसी एंड दिस इज द डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस ऑफ माय क्लोजर.
STLC is now ended. The STLC has now ended. I'm completing my testing, and this is the document of my proof that I have done all my STLC completely. टेस्ट प्लानिंग में क्या करेंगे? टेस्ट प्लानिंग में हम लिखेंगे कि हमें कैसे टेस्ट करना है, हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट, हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट, what are we going to include in my test, what is in scope, what is out of scope, which date I am going to start my testing, which date I am going to end my testing. ये सारा कुछ मैं पहले प्लान कर लूंगी, फिर उस प्लान को देख के ना मैं टेस्ट केसेस लिखने लगूंगी, उस प्लान को और बीआरडी को देख के मैं टेस्ट केसेस लिखूंगी दैट ओके आई नीड टू लॉग इन टू द IRCTC, आई नीड टू बुक अ टिकट, ऐसे करके ना मैं सारे टेस्ट स्टेप्स लिखूंगी, टेस्ट केसेस लिखूंगी। फिर जब हमको डेवलपमेंट टीम एक्चुअली में सॉफ्टवेयर डिलीवर करके देगी तब मैं एक्चुअल एग्जीक्यूशन करूंगी। ओके मैं चढ़ के देखती हूँ कि सच में टिकट बुक हो रही है कि नहीं हो रही है, सच में अकाउंट से पैसे कटे कि नहीं कटे हैं। आई एम गोइंग टू डू ऑल दैट टेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट एग्जीक्यूशन। और फिर मेरा जब खत्म हो गया तब मैं क्या करूंगी, टेस्ट साइकिल क्लोजर करूंगी। तब मैं क्या करने वाली हूँ, टेस्ट cycle closure, that this is what was being tested, this is that was not being tested, we raise these many defects। और हम क्या ऐड करेंगे कि हमने क्या लेसन लर्न किया, क्या हमने लेसन लर्न किया, इससे हमें क्या और अच्छा कर सकते थे, ये सारा चीज हम टेस्ट क्लोजर साइकिल में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो मेरा जैसे ये फेज खत्म हुआ ना गाइस, देन यू नो व्हाट, आई विल कम बैक हियर, और मेरा ये टेस्टिंग का अंदर वाला पार्ट तो मैंने खत्म कर दिया, मैंने टेस्ट साइकिल क्लोजर जहां पे मैंने किया ना वहीं पे मेरा ये वाला फोर्थ फेज खत्म। At that point, my fourth phase is finished. What I'm going to say next, that the testing is completed, everybody. Everybody, the testing is now completed. Please find attached, please find this test closure document. And now this build is ready for deployment. और एक डिप्लॉयमेंट की अलग टीम होगी, there will be a team which does the deployment. There is a team which is only responsible for deploying the code into production. Production मतलब live पे हमारे जैसे लोगों के यूज के लिए। ठीक है, सो मैंने अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली, मेरा टेस्टिंग का लाइफ साइकिल खत्म हुआ, प्लस मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में भी मेरा टेस्टिंग का फेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं डिप्लॉयमेंट में करूंगी, एंड आई विल आस्क द टीम टू डिप्लॉय टू एवरीबडी टू यूज इट, द पीपल विल स्टार्ट डिप्लॉइंग इट, पीपल विल स्टार्ट यूजिंग इट, एंड देन द मेंटेनेंस टीम विल लुक आफ्टर इट्स मेंटेनेंस। So this is what we studied about the phases of software development life cycle and the software testing life cycle. ठीक है, ठीक है everybody, is it clear? Can anybody know that how do we do this? How is this all thing done? So the test environment, how the test environment is built, so the test environment is built with the help of the testing team plus the development team plus a database team. There is a database team also, there is a database team which is involved, or there is an environment team also. So with the help of all those three, they will come to us and ask me आपको कैसा data चाहिए, आपने BRD पढ़ी, आपको कैसा data चाहिए, then we tell them our requirement. Then what they do is either they create, either if it is simple to create the data, then they will ask us to create. If it is not simple and there is a complex process to create a data, then they will help us in creating the data, and the data has to be created. Without the data or the setup of test environment, we cannot do our this phase. ये phase complete नहीं होगा तो हम इस पे नहीं जा पाएंगे. We cannot do the test execution. BRD full form is business requirement document. BRD business requirement document. BRD stands for business requirement document. ठीक है, BRD stands for business requirement document. So until and unless we complete the setting up of the test environment, which includes the data, which includes the building the application setup for the testing team to use that environment for their own testing, for only their own testing and no interference.
people here and there will not use that environment to do the testing. Development team उसको नहीं touch करेगी, वो अपना internal machine पे देखेगी, वो अपना local पे देखेगी, कोई और उसे use नहीं करेगा, सिर्फ testing की team उसे use करेगी. We need to give that independent environment. We need to have that independent environment. अगर वो नहीं होगा तो हमारा test execution नहीं हो पाएगा, for sure, for sure. ठीक है? So this is what was test execution. Any questions? Any more questions, guys, related to STLC and related to SDLC? Hope the person who asked the difference between SDLC and STLC is now clear. Clear, okay? Very good. Yes. Yes, clear. So this is what we did for STLC and SDLC. Okay. So it's the, so nobody is going to ask you clearly in the interview that what is the phases of STLC. They will try to ask in between questions. Okay. They will ask you, okay, do you know, have you heard about the test setup environment? Then you need to say that is that is a phase of STLC, and how do you do it. They are not going to ask you a theoretical question that, okay, explain this cycle of testing. No, they are not going to ask you so straightforward questions. They are going to tweak it. वो ट्वीक करेंगे और वो आपसे सुनना चाहेंगे कि इसको कॉन्सेप्ट्स पता है कि नहीं. ठीक है? So try to understand the concepts. They will ask you that, is there a document wherein you will mention what you will test and what you will not test? They will ask us questions like that. What you will say, yes, there is a document called as test planning, wherein we will say that this will be these are the features that will be tested. These are the features that will not be tested. So yes, there is that we can mention this. Isn't it? So try to understand the concept. Don't try to mug it up. Don't try to mug it up. Ask, think about it. Okay, think about it. If people come to you and say that there is no BRD, how you are going to test? So it's going to be difficult. We need to upfrontly say that it's going to be difficult if there is no BRD to test, because the BRD is a kind of a bible in the software development life cycle. सब चीज का बेस है वो, हर चीज का बेस है. डेवलपमेंट के लिए बेस है बीआरडी, टेस्टिंग के लिए बेस है बीआरडी. सो बीआरडी इज क्रूशियल. इट्स अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट इन द एंटायर एसडीएलसी साइकिल. Make sense? Do you think it makes sense, the things that I'm explaining about, that why SDLC and why STLC is important in software development life cycle? Isn't it? Yes, true. So I think we are done with SDLC, STLC as a part of today. Tomorrow we are going to understand the types of softwares. Tomorrow we are going to study the types of softwares. That what is types of software testing. We are going to study this one. Okay, we are going to study types of software testing. Okay, we are going to just study what are the types of software testing in tomorrow's session. That's also going to be very interesting, wherein we will understand what are the types and how do we test and so on. So the same timing, the class will be started tomorrow, which is the 7 p.m. So we are going to start at the same time, and I request everybody to just be on time, so that we all take the advantage and start on time and end on time, and ask questions and reply to each other. So far, any questions? Please ask me. Please ask me, ma'am. ये नहीं समझ में आया, ma'am. 7 p.m. 7 p.m. is the class timing tomorrow as well. And the recording, we will put it in the WhatsApp group, that where you are going to get the recording. But you're going to get the recordings. Okay. Yeah. Welcome. And anything else that you would want me to help you with? The recordings are available, guys, for you.
Okay. So see you tomorrow at the same time. And please keep learning, and please come up with questions if you go through it today. The STLC, SDLC, please come back and ask me questions. And tomorrow we meet again. Till then, take care of yourself and have a nice evening. Good night. Bye bye.